will take it forward on the topic corporate events. Over to you, gentlemen. Check. Good evening, House. अभी हमने मोरानी साहब का सेनियो का एक अमेजिंग वीडियो देखा, लाइफ स्टोरी सुनी. उससे पहले हमारे पास एक एंटरटेनमेंट सेशन था विच वॉज रियली अमेजिंग. हमें बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली. और इस सेशन के बाद एक सेशन और है जिसका नाम है वेडिंग्स. तो ये जो ग्रैंडियर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड वेडिंग है, उसके बीच में एक बहुत वर्सेटाइल सा ग्रुप हमारे साथ आज मौजूद है इस कॉरपोरेट सेशन में. क्योंकि राजस्थान इन टर्म्स ऑफ वेडिंग्स शोज़ बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. कॉरपोरेट थोड़ा सा रीजनल लेवल पर कुछ टाइम में वीक हुआ है, बट अगर हम इसका ऑरा और इसका ग्रैंडियर अगर बड़े स्केल पे देखना चाहें तो आई थिंक इट इज़ मोर दैन वाइबल दैन एनीथिंग. So first of all, let me introduce the house to you. We have Mr. Jaideep Mehta with us. He's the president EMF and the owner of True Events. Then we have Mr. Snehil Wadi with us. He runs KD Talent Management Company. We have Mr. Varun Mathur with us. He's the founder of Vector Sports Management and Media Management as well. And on my left, ये शख्सियत शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है, Abhijit Sawant, known to everybody. So I would like to give a good round of applause to this versatile group of people sitting on a session which is actually a versatile section to understand. मैं सबसे पहले वरुण जी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा. वरुण जी, हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से उभरा है. और अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करूं तो IPL, कबड्डी, फुटसल, दे हैव एक्चुअली ब्रॉट द कॉरपोरेट इंडस्ट्री इनटू अ सच वर्सेटाइल मार्केट कि उसकी जो पेरिफेरी है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद हम एक किसी भी बड़े इवेंट का जब ग्रैंडियर देखते हैं तो शायद उसकी स्केलिंग हमें मॉनेटरी टर्म्स में नज़र आती है बिकॉज उसमें कैश बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. बट अगर हम आज IPL को देखें, फुटसल को देखें, या हम कबड्डी जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे धीरे धीरे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हैं वो इस स्केल पर जा रहे हैं कि उसको इमेजिन करना मुश्किल है. आई जस्ट वांट यू टू एलोबरेट मोर टू द हाउस कि इसकी एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़, इसका नेचर, इसका कॉर्पोरेट सेक्टर पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है. First of all, thank you, Harpreet ji, for having me here. I'll begin by saying that इसके लिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल दुनिया में ये है कि दुनिया का सिंगल सबसे बड़ा इवेंट किसी भी टाइप का हर साल होता है. एक इवेंट कॉल्ड सुपर बोल इन नॉर्थ अमेरिका, विच इज द फाइनल ऑफ द NFL सीजन इन द US. उस इवेंट का अपना टर्नओवर जो है सालाना, वो इंडियन टर्म्स में रफली 13,000 करोड़ के करीबन है एक इवेंट का, विच इज वन डे इवेंट विच इज 13,000 करोड़ इन टर्नओवर. उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स दो एलिमेंट्स में बहुत ही यूजफुल फ्रॉम अ इवेंट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. पहला तो क्या है कि इट ब्रिंग्स अ इलोंगेटेड पीरियड ऑफ यूज. सो अनलाइक एन इवेंट जो कि एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है होने के बाद, एक स्पोर्ट्स इवेंट की कैपेबिलिटी ये है कि वो एस्टैब्लिश होने के बाद नेचुरली अपने वर्च्यू में ग्रो करता है. आप देख सकते हैं कबड्डी जब शुरू हुआ था तो कबड्डी बिगैन विद अ स्मॉल सीजन, वन सीजन एज एन इवेंट. ऑलरेडी कबड्डी हैज इलोंगेटेड एवरी इंडिविजुअल सीजन, और साथ ही साथ कबड्डी का 2 सीजन अब एक ही साल में होने लगे. सो नंबर ऑफ डेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स इवेंट कीप्स ग्रोइंग. अगर आप बाहर के लीग सिस्टम्स को देखेंगे, यूके में, US में, तो वो लीग सिस्टम पूरे साल चलते हैं. मेजर लीग बेसबॉल साल में 180 दिन खेलता है एक वेन्यू में. तो जो यूटिलाइजेशन नंबर ऑफ डेज हैं वो बहुत रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं, विच फ्रॉम अ इवेंट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वैल्यूएबल. सेकंड, स्पोर्ट्स का यूनिक नेचर ये है कि वो शुरू भले ही स्पॉन्सरशिप सपोर्ट से होते हों, बट वो इवेंचुअली टिकटिंग का नेचर ले लेते हैं. एंड कोई भी इवेंट को अपना मैसिव पोटेंशियल अचीव करने के लिए टिकटिंग को एक्सेस कर पाना बहुत जरूरी है. सो ये दो नेचर्स की वजह से स्पोर्ट्स इवेंट्स ग्लोबली
मैसिव रेवेन्यू चर्नर है फ्रॉम एन इवेंट मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट। तीसरा, वो जनरली इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं because sports events usually push boundaries. You can see that in the IPL opening ceremony, right? IPL opening ceremonies are some of the most complex events that event managers in India are pulling off. So उससे जो infrastructure creation होता है from an event management point of view, जो best practices आती हैं, जो general level of performances, size, scale establish होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तीसरी चौथा पॉइंट ये कि the event management from a point of view of fixed venues and flexible venues, वो दो key areas हैं जिसमें fixed venues में you will find that sport will be able to create very large monetizable opportunities. Jaipur especially and Rajasthan in general is very importantly located from a sports calendar point of view because north में sports के गिने चुने बड़े centers हैं unlike west and south जहाँ बड़े centers हैं. That is why a lot of the league systems have Jaipur as a franchise, and increasingly Jaipur will continue to be a franchise as these league systems grow, both within the league system and जैसे और sports की league बढ़ेंगी. So उस point of view से it will become imperative for event management companies in Rajasthan to bring in the best practices जो Bombay, Delhi में use हो रही हैं, in fact जो internationally use हो रही हैं, and you will find that as ticketing kicks in, इनका जो revenue potential है वो massive हो जाएगा. But what we have seen in last certain years, usually पहले ही होता था कि किसी भी sponsorship को एक बड़ा business house support करता था, funding होती थी, they have financial creations for the entire year. But जो पुराने पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि छोटे शहरों से कुछ individual brands निकल कर आ रहे हैं जिनके पास अपने certain budgets हैं, वो IPL को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, हाउ डू यू सी दिस दैट दीज ब्रांड्स इन केस इफ दे आर लोकली बेस्ड, so that employment generation as well as the possibilities for the local event agencies is also generated. So how do you fortify this, that in terms in coming times how this is going to be more elaborated? Harpreet ji, that's a very valid point, and in fact अगर आप नोटिस करें तो उन बहुत सारे छोटे ब्रांड्स में अक्सर ब्रांड्स सबसे पहले स्पोर्ट को यूज करते हैं नेशनली नोटिस होने के लिए, बिकॉज टिपिकली किसी भी और प्लेटफॉर्म की एंट्री कॉस्ट, वी ऑल्सो डू सम वर्क इन बॉलीवुड, बट बॉलीवुड में एक सीरियस इम्पैक्ट कर पाने के लिए एक नए ब्रांड के लिए जो किसी रीजनल मार्केट में ऑपरेट कर रहा हो, एंट्री बैरियर बहुत हाई है. स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई गिव यू एन एग्जांपल. साइकिल अगरबत्ती, which is now in the last 10 years transformed into India's first branded agarbatti mega brand, right? Or SRMB Steel, which was a small steel manufacturer in the east, which has now become a sponsor of some of the IPL teams. They all use sport as a platform, and sport में flexibility ये है. मुझे याद है कि राजस्थान based Wonder Cement है, which is RK Marble. They did a Rajasthan cricket league system, right, across cities in the country. सो स्पोर्ट के साथ बेनिफिट क्या है कि विदाउट हैविंग टू हैव अ वेरी हाई एंट्री बैरियर आप स्केल अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं. आप एक शहर में लीग शुरू कर सकते हैं, 10 शहरों में, 100 शहरों में, जो भी आपका लीग का स्केल बनता है. सो इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज बिफोर दीज ब्रांड्स बिकम नेशनल ब्रांड्स. आज साइकिल अगरबत्ती कैन अफोर्ड एनी ब्रांड एम्बेसडर इन द कंट्री. But if you observe their journey began with cricket, or their journey began with other sports. Similarly, SRMB Steel की journey local मोहन बागान versus East Bengal derby होती थी, West Bengal वहाँ से शुरू हुई. So the idea essentially is कि कैसे वो इन platforms को use करें across multiple cities, और वो scale available है. आप कुछ लाख रुपए से लेके कई करोड़ रुपए तक किसी भी scale पे events कर सकते हैं. They will definitely generate more employment also, and वो एक system जो एक particular region का sponsor है, जैसे cement या स्टील, ऐसे एरियाज हैं जो लोकलाइज्ड होते हैं हमेशा जिनके, तो आप उनमें देखेंगे कि उनके जो स्पॉन्सर्स हैं दे विल ऑलवेज कंटिन्यू टू फंड एंड ग्रो इन दोज एरियाज, इन दोज ज्योग्राफिकल एरियाज. I'll pass in this to JDU. When we talk about these sponsorships, Gujarat being our financial capital, and there are a lot more things happening around in Gujarat because our background of our PM is also from the same periphery. So in terms of sponsorships and big events, how do you see Gujarat or other parts of India coming up more on the national and the global scale? See, if you see now Kabaddi, Adanis have taken over
all right? That's a study was, they were offered a team at 6 crores. They never bought it, and they land up buying at 18 crores. So today, any sport, ideally is more electronic, anything which is on electronic, and that's a national or global or Asian exposure. So any money spent, today an excellent example from a corporate house called Winnie Pharma, which is the fog. They don't do any print, they don't do any outdoor, they only do electronic, all right? That's the way he says we want to have the maximum reach. It's tangible, it's the time when they pick it up. Like any good television or any car brand being launched has to be an IPL or it could be any sport, all right? Because that is the point in time where maximum eyeballs or the TRP is on the top. So now if you say Gujarat, there are Ultra Cement, what do you call Adani's and Nirma and a lot of other brands, you know. They're focusing, and I'm sure there's like 6% penetration on sports, huge to go. And believe me, Kabaddi is one sport, seen more and played less. If you see kids today don't play physically Kabaddi, but because it went on television, that entire shift went on and people are watching it. But that is a slot in which people would like to see a sport in any kind of, beyond cricket is an overexport sport. There's a huge vacuum which will walk in. And that is where ultimately what I say is sponsors want the visibility. Now BTL is the only left out where you can do it, or it's electronic. And there's a huge space, and otherwise Gujaratis are smart. They know where to spend, how much to spend, and when to spend. And sport is the nearest, I think, that's the next big thing to happen. Now coming up to the second periphery of corporate events when we talk about regions, there are limitations of budgets these days. There used to be at times when we used to, if I talk about myself, it's been 12 years for me into this industry, and we used to be a complete corporate guy. But seeing the last 4 years into the regional budgets, I think it has been a big time concess and competition in terms of budgets to the regional locations. Because what has started happening, we know that now the corporates have started getting a project which is a pan-India project. So somebody sitting in a region and somebody sitting in Gujarat, Mumbai, or say on the north area, how do you see the regions to be a support in that terms? Because when we talk about somebody who's took a pan-India project for any corporate brand, and he wants the local associations to be there. So how do you see a collaboration between a particular state to the other state on a regional or a national level? The question is the collaboration, or it is how do you justify that spend? It's both, the collaboration as well as the communication and the end deliveries. See, though it's a pan-India concept, but it has to be tropicalized. What would work in South might not work in Gujarat, example, or Rajasthan in that case. So now people are trying customizing a concept and then executing it. Now when it is ideally shown on a scale, which is the brand image has been a very important. Initially only it has to happen with international brands. But now regional brands which are going global, they also have got a brand manual and to adhere to it. But day by day, and believe me, after demonetization, hardly any money left on event per se. It's only dealer meets which is where they spend and money is justified in terms to woo them, and that is the awards and recognition. So, which you say, that Pan-India designed a concept executed on regional level at the best price is being after demonetization, what you and me have equally seen in corporate is a big struggle. And at that point in time with the limited budget to give a output of the same level of nationally visualized or conceived or presented concept is really going difficult. That's where the struggle we as an agency versus the commercial head of the corporate is actually experiencing. फिर बोलता है ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पर कर लो बट थोड़ा बहुत यहाँ पर कर लो beyond a point we have our own quality standards, we don't stoop down to that regardless if there's budget or no budget, you know. We try to do, because we've been in business for a while, people look at us in a like experienced and organized agency. So there's a big delay which is coming in now, as you rightly said, pan-India concept which is organized, designed, and regional have to execute it at the given X budget, which is still a struggle, which I think we overcome only with networking and the kind of volume that an account, see, now every lead, every time it comes, it goes to 3 vendors. So there's no exclusivity where I would invest in that corporate. Maybe this campaign doesn't have great money, but following campaign might have.
So loyalty through corporate to agency is missing, where you are not sure that this you might have done at a thin margin, and the next one, the big one, is going to come. That would come in your pocket. No, at that point in time, also there's going to be a 3-vendor policy, and still you don't really not sure going to get it or not. So that amount of investment of money vis-a-vis that loyalty of earlier, I'm telling you, just 5 years back, there were corporates that there are 3 defined agency which they will work with, and that X amount, like say 20 crores or 30 crores of business will go within 3 years. At least you are sure that 5-6 crores of budget is definitely going to come in your pocket, all right? But now that thing has fade off. It's every event versus event, and the budget versus budget. So it's still a struggle which everybody's struggling after demonetization how to go about it. In recent times, there was a process of a corporate to register a particular agency to its system. जैसे अगर हम हमारे हाउस को इंट्रोड्यूस करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कॉर्पोरेट नहीं वेडिंग्स ज़्यादा करते हैं, तो उनकी जो लिमिट है वो ये है कि वो कभी कॉर्पोरेट को पिच नहीं कर पाए क्योंकि वो रजिस्टर्ड एजेंसी नहीं थे. तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कॉर्पोरेट इस सिस्टम को भी धीरे धीरे चेंज करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स करने को तैयार हैं क्योंकि उनके पास बजट्स की लिमिटेशन है? तो आपको क्या लगता है कि ये बैलेंस बनेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में और बजट्स में? See, corporate is a lot of discipline, sensitive market. There's nothing great profits. Like weddings are a no recession industry. There's huge money in it. Is like, people spend crazy. People don't look finishing. There's more emotional event. Corporate is no emotional event. They want थोड़ा भी creasing हो गया backdrop पे flex में तो तुम्हारा पैसा कट जाता है. And they count everything which is on trust here, there or what. So corporate is more stylish, more organized, more work order oriented. It's more organized business. So those guys who are not qualifying to be a vendor on them just because of budget constraint they would get, I don't think that get because that kind of temperament. Like if you do a government business, you need a lot of patience. You need the tendering process, doing it, money after 90 days. It's a different ballgame altogether. The guy who does wedding might not be comfortable doing government, or government guys are not very comfortable doing wedding. Every event has its own sensibility. But managing a corporate, executing Nibhana is not that easy. It's more discipline. You're talking to a CEO is a different experience. Making the walkthroughs, 3Ds, presentation, which doesn't happen in wedding. It's more emotional, more set, design, all that. So I don't think the guy who don't qualify into corporate, they would also not burn their hands just because of budget constraint. They would love to work with those agencies and they would force or recommend you work on thinner margins rather than experiencing or being adventurous to work with the agencies who are not qualifying also. So I don't think that stage would come where they can risk their jobs basically. So that means the people who are working in the corporate market should be sustainable enough and be confident that the market is going to actually revive because the present situation is not very good in terms. No, it's going to be turnover. Today they are doing business of worth 1 crore. If they grow that business over 3-4, they can negotiate with the vendor. See, it's the money you save with the money you earn. My corporate is going to give me this money, but if my volumes are going to go higher, I'm going to definitely negotiate with my vendors. So it's a standard saying, because I did corporates like for 15 years, the money saved is the money I earn. Simple, and that only goes with vendors. And that is again the volume game. If you have a big volume game, I'm sure you get better deals rather than expecting corporates to give you better funds. That's great. So now turning around to Snehal in talking in terms of the artist management. We all know it has been a big time market. We have big players all around with us here. So when you talk in terms of a corporate pitching you for a particular artist, how do you feel a difference between budgeting a corporate and budgeting a wedding? Because we all know that there's a basic difference between a price which is being shared for a wedding and a price which is being shared for a corporate. So how do you manage that? See, basically ये problem आता है corporates में कि जब आप quotation देते हो, there is a 3 companies, right? तो तीनों एक artist pitch कर रहा है, जैसे अभिजीत सावंत का है तो अभिजीत सावंत को pitch कर रहे हैं, तो 3 quotation अभिजीत सावंत के जा रहे हैं, ठीक है? अब उसमें tag rider जैसे उन्होंने बोला कि पैकेज दे दो, ये दे दो, तो ट्रैवल, स्टे, एकोमोडेशन, पहले से वो लोग बजट दे देते. आफ्टर डेट आता है एंड में कि प्राइसिंग, अब सर हम तो ये प्रोडक्शन में कवर कर लेंगे या साउंड में कवर कर लेंगे. फ़ोन आता है हमको कि भाई ये कैसे करेंगे, अभी तो हमने कोटेशन दे दिया है, अब हमको ये प्राइसिंग इनको मिल रहा है. ये तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बट टेक्निकली अब जो जाएगा स्ट्रेट चेकलिस्ट बना के कि भाई ये आर्टिस्ट चाहिए तो उसके पीछे चेकलिस्ट बनता है. उसका ट्रैवल क्या है, स्टे क्या है, एकोमोडेशन कितना, गाड़ी कितनी लगनी है,
F&B कितना आना है. कई बार ऐसा फोन होता है, सर आर्टिस्ट तो चला गया, 10,000 का खाने का बिल आ गया. हाँ जनरली होता है. जनरली होता है. उनको वो चेकलिस्ट में उन्होंने डाला ही नहीं F&B का कॉस्ट. उन्हें वो होटल स्टे देना है, पर उसके पीछे बैंड आता है, उसका पूरी टीम आती है, उनको कितनी गाड़ियाँ चाहिए. तो कॉर्पोरेट्स में ये जनरली ये प्रॉब्लम्स आते हैं. और वेडिंग में क्या है, क्लाइंट का है, शादी का माहौल है, फंड्स का इश्यू नहीं है, आगे 2 दिन पहले भी सर ये कर लो वो कर लो, तो वो हो जाता है. बट इन कॉर्पोरेट्स देयर इज अ बिग इश्यू कि ये लोग हर बार कोटेशन ओवर कर देते. लाइक 15 लाख का कोटेशन दे के फिर बिजनेस करने जाते हैं आर्टिस्ट के साथ. तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कभी कवर नहीं होता है. बट फिर भी मज़े वाली बात है कि वेडिंग में पैसा ज़्यादा मिलता है और कॉर्पोरेट में कम. ऐसा क्यों? कॉर्पोरेट में बेसिक क्या है कि 365 डेज बिजनेस है. शादी क्या है, 90 डेज मैक्सिमम. उसमें आप कितनी शादियां करवाओगे? ये 365 दिन चलने वाला काम है. यहाँ पे आप डेली काम कर सकते हो, डेली कम कमाओगे. एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट चेक करोगे वेडिंग और कॉर्पोरेट्स की, तो दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा. इस फॉर माई कैलकुलेशन, क्योंकि ये डेली काम चलता है. जैसे 10 सिटीज टूर है एशियन पेंट्स की लगती है. अब 10 सिटीज टूर में आपका बजट जाता है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का. अब एक शादी करते हो तो वही चीज़ होती है. तो ओवरऑल टोटल लगाओ. हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आपको रोज काम मिलेगा और कम प्रॉफिट मिलेगा, और कुछ नहीं है. So coming to Abhijit now, Abhijit, when we talk about artist, जैसे मैंने स्नेहिल से अभी पूछा कि basic difference corporate और wedding section में, so how comfortable you are in terms of dealing with the direct client and an agency, because usually हम हमेशा ये हमें समझ में आता है कि हम जब एक एजेंसी के साथ काम करते हैं और हम एक डायरेक्ट काम करते हैं तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है. सो एन आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं जब आप डायरेक्ट क्लाइंट से डील करते हैं और एजेंसी के साथ डील करते हैं? First of all, good evening, everybody. Thank you so much for having me here. Actually, personally, whenever we are doing corporate events, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम होता है हमारे लिए, क्योंकि यू नो सॉन्ग लिस्ट हो. एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट मैं बात करूँ तो सॉन्ग लिस्ट की बात करें, गानों की चॉइसेस की बात करें, थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम होता है, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा हमें अलग करने की कोशिश करने के लिए एक मौका मिलता है. बट पर्सनली आई स्टार्ट विद माई क्लोथिंग क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो व्हेन यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट शो, वहाँ पे कैसा आपका अपीयरेंस होना चाहिए, बहुत सारे आर्टिस्ट वहीं से लैक होता है, वहाँ से ही शुरू होता है कि अपीयरेंस ही आपका वेडिंग वाला है एंड यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट शो. सो वो ही सुधारने की कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम my preparation start from my clothing, then of course the song list and songs. But more than direct clients, I always prefer talking to agencies or to event managers, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. एंड दे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्लाइंट को सीधा नहीं बोल सकते. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, जैसे अगर वेडिंग भी कर रहे हैं, वेडिंग यू नो एक आदमी अपनी फैमिली की लड़के की शादी कर रहा है, लड़की की शादी कर रहा है, वो शायद पूरे लाइफ में 2 या 3 शादी करने वाला है. तो उसके लिए एक बहुत एक इमेच्योर सा डिसीजन होने वाला है. वो इमेच्योर अपना एक प्रोफेशन गिरी करेगा, बोले ये कर सकते हैं हम लोग. बट जब एक आदमी, प्रोफेशनल आदमी आपके सामने आता है, वो खुद बताता है कि भाई तुम्हें ये भी लगेगा, you know, you just don't want this thing, you need this also. So you know, keep in mind that it's very important to talk to event manager or the agencies who can understand properly to you and who can tell and you can solve your problem properly, and that is very important, I believe. So that means we are fortunate that हम लोग ज़्यादा nurtured, ज़्यादा learned हैं, और we are fortunate that we are event managers, and artists like Abhijit actually believes us for his trust factor. So JD, coming back to you, talking in terms of a particular word which is called stress management. Now when we talk about a corporate event, when we differentiate basically a corporate event and a wedding event, what is the level of distress and stress in terms of deliveries when you deliver a client a particular wedding or a particular corporate event? I would say
in corporate, you can't overcome it under deliver. It's a very work order driven. There are auditors who just see what you committed in terms of lights, sound, specification, performances. Wedding, you don't have to write how, means it's going to be verbal, how long Abhijit is going to perform. Corporate, they say, okay, minimum so much, right? So it's very, in wedding, you have 3 date changes on artist travel. Corporate says, we give you 1 ticket. Now, the rest, in case there are 3 changes, you're going to bear on yourself. So corporate is very disciplined business. As Snehal said, it's round the year, all right? So even there's no fancy that S-Class hi bhejoge to aayenge. He said a luxury car. It could be an Accord to Camry or to anything. So corporate, the different pricing, everything. Stress management is huge. Wedding is more, I say, is emotional event. Everything goes gaga on that particular, that 2-3 hour of event. In corporate, it's like the stress starts from your walkthroughs and 3Ds and presentations and a lot of gaga because the guy who's sitting there is an MB himself, has to be. That's the basic gateway to get in. The kind of discipline they expect, the kind of finishing they expect, everything is like, it's not the D-Day, it's the process entire. So I said a corporate is more disciplined. If you are into that space, you also love to work very organized way. Without a work order, nobody moves also. Yes, you can plan, but you can't go ahead without the work order. So it is more, so I think stress, that is an emotional social stress, where this is a disciplinary stress. Stress in any case is there, but it is more organized stress. So I loved it, so I've been doing it for years. Or Yeah. organized, but yes, we tend to have that amount of level of stress. Varun, I'll come back to you on one more question on this. How do you see, or how do you portray a career in event management for an event manager in the sports management area? Well, event management to sports is as core as a business can be. Because when you think of any sports activity, at the heart of it is a very well organized and well executed event, right? And more than anything else in the world, it's important because it's live in nature and it's usually televised in nature. So imagine the pressure of having both a live event and a televised event. So at the heart of any great sports activity, any great sports league is great event management. And if you look overseas, whether it is league systems, teams, clubs, franchisees as they call them in America, individual events where athletes compete, whether it's the Grand Slams or individual, tennis tournaments, golf tournaments, all of them, whether within the organization or within large organizations, have great event management capability and great careers. I spent a good part of my career with a company called IMG, which is amongst the world's largest event managers in sport. And what separates them is exactly what the this panel is discussing, which is the ability to execute an event at that scale, that well planned. Because if there is a delay, there's a famous sports event that took place last year, which was a boxing fight between Mayweather McGregor. They had technical issues which delayed the event by half an hour. Now imagine an event which is being watched by over 2 billion people all over the world, delayed by half an hour. दुनिया भर के सारे ब्रॉडकास्टर्स के शेड्यूल हिल गए बिकॉज अब वो आधा घंटा कहीं से निकलना चाहिए, राइट? सो all of these organizations have within them, or when they work with companies, have great event management capability. And अभी तक वो careers इंडिया में शुरू हो रहे हैं, बट आप देखेंगे कि आने वाले कोर्स में जैसे जैसे लीग सिस्टम्स बड़े होते हैं और लीग सिस्टम्स की ड्यूरेशन बड़ी होती है, क्योंकि अभी हम आप नोटिस करें तो लास्ट ईयर तक जो इंडियन लीग थी, दी ISL in football, we were playing it for 2 months. This year we've expanded it to 6 months, right? Similarly, there is already Kabaddi, which I was discussing, has already been expanded. So as the league systems expand, the event management jobs both within the companies and for event management companies will definitely rise. I can tell you that at the heart of already the bigger systems, there is IMG की टीम जो है वो पूरे देश में ट्रैवल करती है ISL के इवेंट्स, लोकल पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए, एंड वो टीम साल में 6 महीने सिर्फ यही कर रही है. So there are going to be great opportunities in that area, and this is only, मेरे हिसाब से why event managers should keep an eye open on that area is because ये मार्केट ऐसा है जो अभी सिर्फ शुरू हुआ है, एंड जिसका पोटेंशियल इंडिया में in the course of the next 5 to 10 years
as the penetration grows, it will become very, very important. So coming back to Snehal and Abhijit, because you have the same forte and he's an artist and you are managing people like him. When we talk about sports, तो बहुत सारे inaugurals में, closures में artist की बहुत ज़्यादा importance है, visibility बहुत बड़ी मिलती है और जैसे हम बात करें series of events होते हैं, तो उस perception को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले time में, क्योंकि obviously ये एक link है between an event agency and an artist and a company, they build up an event and they deliver it to people. So how do you foresee this as an artist and an agency to collaborate with an event manager and get it on board on a bigger scale? बेसिकली ये है कि जो लाइक कोलैबोरेशन जैसे स्पोर्ट्स और एंडोर्समेंट का जो मैटर आता है, जनरली बड़ी ब्रांड जो होती है वो जनरली खुद पहले एंडोर्स करके ही रखती है आर्टिस्ट का अपीयरेंस और ब्रांड का, और ये जनरल होता है। तो उनका जरा गाला डिनर और एंटरटेनमेंट का जो पार्ट होता है उसमें लार्ज स्केल में अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, पहले इतना नहीं था, बट अब लाइटली थोड़ा थोड़ा वो लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आई होप सो इन फ्यूचर देयर इज़ वेरी बिग पर्सपेक्टिव। और अगर हम बात करें हैं कॉर्पोरेट बजट्स की, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है अभिजीत कॉर्पोरेट बजट्स को लेके कि आजकल हर कंपनी के पास अपना एक स्क्रूटनाइज बजट है, कट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर देयर इज अ कट ऑफ इनटू द बजट्स। सो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो आप कैसे इसको देखते हैं कि आने वाले टाइम में एज एन इवेंट एजेंसी और एज एन आर्टिस्ट और एन आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए? दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। बेसिकली इंडिया और वर्ल्ड वाइड देयर इज मैनी कंपनीज लाइक बजट, हाँ थोड़ा कटफोट होता है बिकॉज ऑफ जीएसटी एंड मनी का जो भी हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत कट ऑफ हुआ है, लेकिन बिजनेस में एंड ऑफ द डे जो काम करेगा और उस जिसको करना ही है, ठीक है, तो वो बिजनेस लाएगा और करते रहेंगे। उसका कभी बजट में आई डोंट थिंक सो कि किसी का कॉर्पोरेट्स का बजट कम हुआ है, इतना नहीं 10-15% का इश्यू है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ है, बट बजट है उनका और काम चलता ही रहता है एवरी डे। इट्स लाइक इंडिया में देखोगे तो मोर देन 500-600 कॉर्पोरेट इवेंट्स चलते ही रहते हैं। या तो वो रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पे जो बजट की स्क्रूटनाइजिंग है उसकी वजह से हो सकता है। जेडी, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? No, I'd say that's I had a client called Uninor, all right? They're competing in Gujarat with market leaders like Vodafone and Airtel. So I said, you want to grow your numbers, you have to create a budget. So we did a reverse plan, that which is the biggest festival in Gujarat was Dandiyas, all right, the Navratris. I said, if you really want to, I said, how many numbers? So we went reverse. See, after time, we don't ask questions to clients. We just go as an agency, what monies they have and what expectation we execute even and come back. I was talking to the CEO, fortunately, I said, I was with Moses Xerox. I used to work myself as a corporate sales head for Moses Xerox. It was taught to us, you talk to the man. Man means the guy who's got money, authority, and the need. So it was always taught to us, you talk to the person who's sitting on the triangle, that what does he want? All right, so he says, this is the number game I want. I want 20,000 subscribers in this week. I said, how to get that 20,000 subscribers? I said, what is the money you have to get? He said, this is the money I have. He said, no, you have to create a budget. अगर आप मुझे 2.5 करोड़ रुपए देते हो, मैं आपको 20,000 activations देता हूँ. Well, if that is so, then we pay. I said, this is not subjective. But I have a plan, I'll showcase, and if you trust my plan, let's get it out. Because ultimately, it's your sales team going to sell it. I'll create an experience, I'll create a product. And that product, your people will have to translate into action and get your revenues. We took a budget of 2.5 crores. We got a celebrity called Devang Patel, who was the most popular. What Falgun is to Mumbai, he is to Gujarat, so he was there. And we had Bollywood artists getting in, serial. Okay? And we created a buzz. Instead of 20,000, we made 25,000 activations in the 9 days. So there are times, you have to think out of the box. You have to go sit with the client. Instead of the money you have and I'll work with that money. That is very conventional way of working. Means you start sitting, you start talking, you talk business, then there is no space of competition getting in. There is no space of L1 to be in it because you've given a solution which nobody would ever think about. Now today when we are doing exhibitions and conventions, we were not in that space at all. Now we are going to the associations, we're talking to them that you have a brand, you have an association, you have a legacy. What you do is, our business is events, we create an exhibition. You have your clients, who are going to be your exhibitors. We pay you money as an association, let's say 50 lakhs to an association. We buy the exclusive marketing rights. We'll market your product. You get your customers on board.
The entire kharcha of the event is ours. And over and above, you will get, regardless we make money or we lose money, but you get 50, 51 lakhs. It's a gaga. It means he has no reason to think twice. He says his risk is yours, investments are yours. We are the person who's going to be on the dais on that day, and you are, going to work hard. There's no problem doing it. So now you will have not those, he pays you event fees, then there are 3 vendors sitting outside and say, who's the lowest fee, who will do justice? That days are gone. Now you have to think out of the box, come with a concept. You will also have to invest. You earlier used to invest time. Obviously. Money. And this formula is fabulous. If you believe in yourself, this is the best formula to do it. And then your profits, which are that limited to 5-7%, will definitely go at a bigger leap to 15 to 20%. But you have to be slightly adventurous. Now, corporate is going to be very competitive market. If you don't think different, I'm sure same way you make that and you keep cribbing all the while. But another formats you start asking questions to your client and create your own budgets, create your own space. Because what experience events can give, your full page or quarter page ads cannot give. You can't quantify किसने अखबार देखा नहीं देखा. वो लाखों Obviously, रुपए चले visibility चाहिए. They need that visibility. experience on ground, nothing can match it. If you justify that on ground activity, believe me, budgets can be created and you really can make your own bucks, which you always work for. When you create out-of-a-box project or a out-of-box thought process for any corporate, I think they would definitely shed out a good amount of money, which ideally goes to all of us when we talk about. Correct. Coming up to the next question, which is sorry. I just wanted to add to what Jaideep was saying. There is one fundamental difference between very large event companies globally and event organizers in India till now. We are continuously pitching our services as entertainment. Events equals entertainment in most cases in our pitch. What companies globally have done is that they have aligned the event activity to the core business goal of the company. Jaideep was mentioning about user acquisition in Gujarat. We used to organize an event called Vodafone T-Walk, which was their golf event. And they had 12 legs to Vodafone T-Walk that they used to do. Vodafone went through a really rough period in between when management change was happening and they cut down budgets, really pulled back budgets. But Vodafone T-Walk never got dropped. Vodafone T-Walk continued. So a lot of people asked us saying, why is Vodafone T-Walk still receiving funding at a time when other events have been curtailed? Because if you look at what Vodafone T-Walk delivered, it delivered literally 40% of their conversions of Vodafone Business Services, the corporate side of services. Their clients were coming to them over Vodafone T-Walk. So if the events business can start delivering actual business goals to companies, then you will find that the event budgets will be there. Companies will continue investing in event budgets and they will not curtail those event budgets. We have to de-link them to the idea of entertainment, which is that this is just entertainment. So ideally, you want to say that the ROI is one thing which the corporate plays around. It's a small event or it's a big event or anything happening around. The Delhi Marathon, Bombay Marathon, Airtel, Vodafone parked their money before they budget their own stuff. That event, they spend 5, 10, 20 crores, regardless, because that's an IP which they don't want to miss. That's a fight to get onto that IP. It's an annual marathon, but that marathon, awaited marathon, and they park their money. So create an IP, go back to them, which is the brand, top of the brand recall, then that's not a problem. So again, it comes to out of the box, yeah. Definitely, because the out-of-the-box idea creates a possibility for like we talk about the Jaipur Marathon. These are the big time marathons you're talking about, but there's a property called Jaipur Marathon which is happening in Jaipur from last around 4-5 years. Fortunately, one of our member is behind that particular concept. So obviously, you have a number of brands. I think they have added up somewhere around 35 to 40 more associated brands in last span of 3 years. So that's a good idea, that when you create something which is out of the box, like you said, AIP, when you talk about, even Mohammed Sahab was also talking about this, that you need to create an IP which should give you an output. Maybe it takes some time to generate funds, but definitely if it goes well organized and in a proper scrutinized manner, you definitely get good results onto that. That is adventurous. We are doing the snooker IPL. That was hosted in Ahmedabad, okay? The game went on for 10 minutes more. It was going on the Sony ESPN. The loss was 50 lakhs because
you bought a satellite, game went on for 10 minutes more, and that's a cost. So it's not always perceived. It's again a very crazy business. Sporting itself, you don't know, and create an IP of your own, like marathon. The two, one is the real international marathon, and one is the tropicalized regional marathon called marathon. But if you really make the way international started, the London Marathon, where it started from till now, believe me, it's a huge revenue module, which we don't think. I think it's a citizen, people of the city participation, but it carries huge amount of funds and sustainable and profitable. Mohammed Bhai says that day one, if your IP is not making money, don't do that. Don't do that, Don't assume 3 साल के ऊपर revenue आएगा. See, everybody, it's their own business and how you take your risk. But yes, any business venture, and if you can't smell profits, but losses, that it's like, how adventurous you are. But yes, sporting IPs, if you're known well, you have consultant like him, Kunal, and something very classic, that is the best. And believe me, I said 6% penetration, the huge 94% left out. And the next age, like today you ask the kids, they're like more towards soccer than cricket. You can't delete or replace cricket. But now younger kids want to go to basketball, what do you call? Baseball, basketball, and soccer is coming such a big way to our country. Amazing. They're replacing. NBA is coming here and coaching kids. The all rich kids, international scout kids, want to get trained by the coaches of NBA. So now when we're talking NBA, we're talking international sport coming to the country. Believe me, it's going to be a hockey graph. The way it's going to shoot is going to be, I said 5 years from now, sporting events is going to be the next big leap, yeah. Now, coming up to I think the last question which I intend to understand. How do you guys, all working on the national level, how do you guys take the integrity of a professional event manager, which is a contribution to our industry? I think, Abhijit, I would request you to start up with this. Actually, even ये पहला जो एक point चल रहा था उसके बारे में भी, when you are talking about the big shows, when we have smaller events also in corporates, most of the time, budget concern की वजह से, event managers, they change the artist, or, they forced to change the artist sometimes. But अगर एक relation अगर अच्छा रहा with the artist and the event management company or the event manager, तो जो थोड़ा बहुत जो बजट कंसर्न है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है. मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इवेंट मैनेजर्स, they don't try to be more friendly or be more don't open communicate with basically. the artist also. So that time, agar, because as an artist also, we are little scared also about the budgeting part and everything. So sometimes it's better कि अगर जैसे लोग मिलते हैं वैसे अगर बातें भी उसी तरह से बढ़ी with the event company, with the event management company, तो I think budget concern जो है we can definitely come together and work out. So बजट कंस्ट्रेंट के अलावा अभिजीत जो हम इंटीग्रिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द लॉयल्टी टुवर्ड्स योर क्लाइंट एज वेल एज टू योर आर्टिस्ट एंड टुवर्ड्स योर ओन प्रोफेशन. सो दैट इज़ वन पॉइंट जिसमें मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा सा रिफाइन होने की ज़रूरत है, बिकॉज पिछले कुछ समय में हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोग, जो हमारा बिजनेस प्रोफाइल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा इस तरीके का होता जा रहा है कि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है. आई वुड लाइक जेडी यू हैव टू गिव अस सम टिप्स to our people on the house जो कॉर्पोरेट कम कर रहे हैं या कम करते हैं या जो समझते नहीं हैं या जिन्हें लगता है कि कॉर्पोरेट एक बहुत स्ट्रेसफुल सा काम है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं, पैसे की सिक्योरिटी कैसे होगी, कैसे हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं. सो आई वुड लाइक यू टू गिव सर्टन पॉइंट्स टू आवर गेस्ट आउट हियर ऑन दिस. Okay, wake up call. Guys, raise your hands. How many times you ask questions to your client कि इतने पैसे में नहीं होगा, इतने चाहिए? कितने जन negotiate करते हैं? ऋतुराज भी आप तो पैर भी ऊपर कर दो. All right, so see, there was one client which was, I was very, he told me you're rude, okay? He said, this is my budget, you have to do it. I said, if you can't afford me, let's not do business, because I'm a Sony television. Huh? आइडिया सेलुलर. तो बोले मैं को यूपी लाइक वोडाफोन. बोले वोडाफोन तो बहुत कमाऊ कंपनी है, हम तो आइडिया है. मैं तो ठीक है, जब वोडाफोन जितना बजट हो तब बुला लेना.
तो बोलिए तो रूड हो गए आप, हमारे तो और 3 इवेंट मैनेजर रेडी जो आना चाहते थे, तो फिर मेरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप बुला लो उनको. सो देयर आर टाइम्स, यू नो, इफ यू आर वर्थ इट, यू हैव टू बी पेड सेम वे. चलो आपके लिए 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, you can't go beyond, right? So there are times you start talking to your client that, boss, if you want good service and you want, then it is me. Believe me, the corporate is the most organized, no stress. एक बार work order निकला, 30 दिन बोला, 45 days पे, 60 days में पैसा आएगा. It's not unlike social events कि समधी जी को पसंद नहीं आया तो तुम्हारे पूरे पैसे कट गए. No. All right? So I have always seen social events, दूल्हा की घोड़ी टाइम पे नहीं चली, गोदुल्हे के पेरेंट नहीं हुए तो हम क्या करें, like, you know. So I was in corporate space for 15 years, all right. Last 3 years I started doing weddings. मैं बोला यार रात को कुछ डिसाइड होता है, सुबह समधी जी बदल देती है, कौन बिजनेस है, क्या पागलपन है, why are we doing this business, you know. But then it is the best business is corporate business, work order oriented, Excel sheet बनती है, boring चीज है, पर at least लिखत पढ़त है, work orders come on time, payments come on time, everything is so disciplined. So that is one way. From that shift, imagine I never used to do weddings, and I got into weddings. I said, let's do weddings for all corporate people. जिससे corporate है, उनकी weddings लेते हैं, like, you know. So we started with pharmaceutical, and because Gujarat is a pharmaceutical epicenter, and we started doing their social events because they were otherwise organized. It's not like fancies, but still, as I said, weddings have bigger profits, but have bigger stresses also, big surprises also. 9-10 करोड़ की wedding कर दी, 7-8 करोड़ आगे पे 2 करोड़ जो बच गए ना, vendor के तो चले गए, आपके बच गए. So unless until you are slaving day one, till the time that couple doesn't come from honeymoon, you don't smell money only. At least in corporates, money comes to you before the CEO goes for holiday. with you actually. So I would say corporate is not a bad word, but yes, a very thin margin. But yes, round the year business, more organized and more disciplined. I've enjoyed for 15 years, but now coming to social space, it has been very organized, knowing the defaulter ratio. All event companies ask 90% before the wedding. So ये भी अच्छी industry है to know that. But unlike, but yes, corporate, I would recommend, if you want a sleepless night करनी है तो wedding कर लो, शांति से सुकून से सो जाना है तो corporate है, और दोनों में मजा आता है तो दोनों कर सकते हो, which I'm doing now, all right? But to an experience, when we talk about corporate, जो lifetime experience, अगर आप weddings कर रहे हैं और आप corporates कर रहे हैं, तो I'm pretty sure कि जिसने crude corporate, I'm not talking about the regional level, but अगर किसी ने MNC corporates करे हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि उस आदमी की जो वेडिंग डिलीवरीज हैं वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा स्ट्रेट टू द लाइन विद अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन और एंड डिलीवरीज ऑन टाइम होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Okay, I have a small film because imagine, I never did wedding ever in my life. So when from wedding, corporate, I shifted to wedding and I did a nice party at the Marriott. And all my clients were corporate clients. And telling them, I said, this is the time I don't say bye to you because you don't pay me more. I'm going to a business which is more lucrative and more no recession industry. And there's no problem. I did showcase this film. And believe me, all my clients, they says, yes, we're going to get you wedding clients because it's a farewell from corporate shift to the wedding. So can I request the console to play that one corporate film? It's like something different which we did, and I was very adventurous to invite all corporates. That's a Baba thing. Your trust factor becomes more stronger, actually. Can you pump the volume, please? Can you increase the volume, please?
Q&A. If anybody has some questions to our panelists, they can actually come up with. Mic दीजिएगा please. Okay, I'll quickly ask a question to Abhijit. Abhijit, fortunately, I know you since 2005 and we Yes. started our career together. एक साथ हमने करियर शुरू किया था. पहली बात कॉम्प्लीमेंट कि आपकी अभी तक उम्र नहीं बढ़ी तब से. आप उतने ही जवान लग रहे हो अभी भी. और हमने सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है, इवेंट मैनेजर का, आर्टिस्ट मैनेजर का, वेडिंग स्पेशलिस्ट सबका. बट व्हेन यू डू कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड आई एम श्योर कि कॉर्पोरेट की बात चले इसलिए कॉर्पोरेट का पूछ रहा हूँ कि कॉर्पोरेट इवेंट्स आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, करेक्ट? काफ़ी सारे कॉर्पोरेट शोज आप करते हैं. एज एन आर्टिस्ट, what are the most important thing which you take care of when you perform in corporate events? One. Number two, ऐसी कौन सी नसीहत आप देना चाहते हैं इवेंट मैनेजर्स को, जो जो दिक्कतें आपको आती है कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हुए, जो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि वो करने से आप आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा? और तीसरी बात, कोई भी आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी कॉर्पोरेट इवेंट का, जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए. Actually, Tasim and me, obviously, we started our career together. हम लोग बहुत छोटे छोटे जगहों पर जाके शोज करते, तभी हम दोनों भी बहुत यंग थे. बट कमिंग टू योर मेन टॉपिक इज कॉर्पोरेट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई पर्सनली बिलीव बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे मुझे भी कहा जाता है, मैं आई मोस्टली वेयर सूट्स इन कॉर्पोरेट इवेंट्स. एंड वोकैबुलरी जो आप बात कर रहे हो उनके साथ, क्या लेवल, क्या किस तरह से बात कर रहे हो, सो दैट आई पर्सनली बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट शो. अगर वो एक तरीके से नहीं हो रहा है तो शो तो 5 मिनट निकाल के, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड एंड टॉकिंग अबाउट द होल एटमॉस्फेयर, क्योंकि आर्टिस्ट आता है सुबह मॉर्निंग आता है, वो अपना सो रहा है, हो रहा है, सब हो रहा है, एंड देन ही कम्स फॉर द परफॉर्मेंस, ही परफॉर्म, और उसको बोला जाता है कि 1.5 घंटा है जो भी परफॉर्मेंस टाइम है. बट द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और जो भी है, वो लोग पूरे 2 दिन से 3 दिन से उन लोगों के साथ घुल मिल के साथ में दोस्तों की तरह भी रह रहे हैं. अगर वो एनर्जी अगर वो आर्टिस्ट को पास कर देंगे, वो बता देंगे कि ये लोग ना इस तरह से है या ये लोग इतने फ्रेंडली है, दे माइट लाइक समथिंग. जैसे एक बार मुझे एक इवेंट कंपनी ने कहा, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर फ्रेंड, तो उसने कहा कि थोड़ा उम्र दराज लोग हैं एंड दे माइट लाइक समथिंग वेरी ओल्ड अनप्लग स्टाइल. तो आजकल का तो मतलब रिलीजन बन गया है कि आप आओ स्टेज पर और डन शुरू हो जाओ, स्टार्ट बिलीविंग दैट एवरीबडी विल डांस बिफोर एनीथिंग एल्स. बट सडनली वी रियलाइज कि वी कैन डू स्मॉल अनप्लग शो, अनप्लग सेट, लाइक 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का अनप्लग सेट, जहाँ पे you can sing something like तुम पुकार लो kind of song also, and people loved it. और वो ही पूरे शो में से, ऑफ कोर्स वी डिड द डांसिंग पार्ट ऑल्सो, बट वो 15 मिनट का जो सेशन था, वो आई थिंक उन लोगों के जहन में पूरे सालों और कई सालों तक रह गया. अभिजीत ने आके वो गाना गाया था. दैट समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, you come to artists and just talk to 5 minutes about the brand, about the whole atmosphere, और वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच तारसिम for talking to me. लेकिन एक बात है, आपने बोला ना कि बात करनी चाहिए, पीछे से इवेंट मैनेजर बोल रहे थे धीरे धीरे कि आपका मैनेजर बात करने नहीं देता है. बोलता है अभी सर तो सो रहे हैं, सर की तबीयत ठीक नहीं है, ट्रैवल करके आए हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि उनसे बात करवाओ. मतलब सर वो इवेंट मैनेजर को एक्चुअली जब वो बुकिंग डालता है ना, तो उसके अपनी मेल में लिखना चाहिए कि मुझे आपसे ये चीज़ें डिस्कस करनी है, प्लीज़ स्पेयर टाइम. वो इंटीग्रिटी और जो प्रोफेशनलिज्म है वो थोड़ा सा हमें भी फॉलो करना पड़ता तो है. यहाँ जितने भी इवेंट मैनेजर है, अभिजीत प्रॉमिस कर रहा है कि हर इवेंट के पहले 5 मिनट सबसे बात करेगा. एक्चुअली मैं ये एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ. एक बार ये जोक नहीं, बट बहुत फनी इंसिडेंट है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, बट एक बहुत बड़ी कंपनी का कॉर्पोरेट इवेंट ही था और मेरे साथ एक बहुत अच्छी सिंगर थी, दूसरी भी एक बड़ा नाम था, और
सेम कंपनी दे वांटेड टू मीट मी एंड वो उन्होंने कहा कि शो से पहले 5 मिनट हम लोग कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं और यू नो विल जस्ट टॉक अबाउट द ब्रांड और यू नो हमारा CEOs भी आने वाले हैं तो क्या होने वाला है, तो मैंने ठीक है एंड विल कॉल द अदर आर्टिस्ट ऑल्सो। तो उनके मैनेजर का फ़ोन आता है, उन्होंने बोला कि उसको बहुत हेडेक है उसको बहुत हेडेक है, प्लीज़ ऐसा मत करो, शी विल नॉट कम। तो इसे ठीक है, अच्छा है यार, विल टॉक। हम लोग नीचे कॉफ़ी शॉप में बैठ के बात कर रहे हैं एंड सडनली वी रियलाइज कि नेक्स्ट टेबल पे वही मैडम बैठी है हैविंग कॉफ़ी। तो ये ऑफ कोर्स ये आर्टिस्ट की भी प्रॉब्लम है, ये आर्टिस्ट का भी एक बड़ा इशू है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा, हैप्पी सर ने जैसे कहा कि अगर ये पहले से बता दिया जाए कि 5 मिनट्स गिव अस कि कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में बता दो। सो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो शो से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ क्यू इज़ अलाइंड, योर शो इज़ इनटू सीक्वेंस, आई थिंक मेरे ख्याल से इजी हो जाता है क्लाइंट के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी इवन कनेक्ट करना अपने आप से। Can I take? या प्लीज Yeah. Hi, this is Sunil again. JD sir, thanks a lot for guiding all this. एक छोटा सा मैं भी अभी कल ही मैंने एक डील क्लोज किया था, जो आपका वो था ना कि बड़ा रूड वाला एटीट्यूड है, सेम मैंने भी फेस किया था, बट उसकी वजह से मुझे प्लस पॉइंट भी मिला कि क्लाइंट ने मेरे को 25% बजट को अप करके मुझे ही काम दिया। तालियां, So, तालियां। Congratulations to the event managers. Thanks That's a an lot, inspiration to आपने- all. That's not rude, that's called guts. गट्स एंड द कॉन्फिडेंस Correct. कि भाई चाहिए तो फिर अभी मेरा तो हाँ, यही है। correct. एंड सर टू माथु सर एंड टू Snail. या स्नेल स्नेहल। सर, स्पोर्ट्स इवेंट्स का जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने पहले भी यही बोला कि सॉरी मैं आपको थोड़ा सा, मेरे बोलने की आदत थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज आई टेक अराउंड 150 to 200 सेशंस इन अ ईयर, तो मेरी बोलने की थोड़ी आदत ज़्यादा है सर। सो अभी अगर आप NBA की बात करें, जूनियर NBA, IPL, pro kabaddi, I am the person in the Jaipur behind all these things. So thanks a lot for all these taking us कि वो confidence कि हाँ इनमें scope बहुत है। I have been doing all these things. बट इनका स्कोप एक ये भी है जो मैं सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना चाहूँगा। आज किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाओ, क्या आपको मालूम है वहाँ से कितने डॉक्टर निकले हैं, कितने इंजीनियर निकले हैं? नहीं मालूम। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, लेकिन आज जयपुर में सबको मालूम है कि नागरकोटी कहाँ से निकला है। दिस इज व्हाट द स्पोर्ट्स इवेंट इज। सो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। एंड राजस्थान में स्पेशली अभी जैसे एक IPL वगैरह तो सब आ ही रहते हैं, अभी एक बॉक्स क्रिकेट करके भी अभी आने वाला है, उसमें भी अपन राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है। तो आई होप कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी स्पोर्ट्स इवेंट की, यहाँ पे आएगा और हम लोग कुछ उसमें कर सकते हैं। थैंक यू। इट्स अ बिग टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इवेंट मैनेजर्स। अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट्स एंटिटी की, तो फ्यूचर तो है ही। दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑल्सो। एनीबडी एल्स? Hi, I'm Nikhil Desai. I'm an international speaker, motivator, and trainer, and I do a lot of corporate work all over the world. So this session was awesome. First of all, I'd like to say, Harpreet, the fact that you brought out that in Rajasthan we are not doing too much corporate work for various reasons, and you suggested that people should probably look at that. Mr. JD, who said corporate work is more disciplined and is going to actually improve the quality of your overall work, I completely agree with both of you all. I really liked what Varun said, that, this is the place where you need to give them a little bit more ROI, return on investment. And that is why I have created 2 modules which enable the corporate world not only to have fun, but also a bit of important learning during those sessions. So that's where the ROI comes in, and that's why at reward and recognition nights, which my clients used to have earlier, were only fun evenings. Now they've included my sessions which are fun with some learning. So it's about an hour session which includes that. All this put together has enabled me to get a Lifetime Achievement Award at the World Training Congress last year,
because I deal with 800 corporates all in 53 cities of the world. So I'm sharing this because I want all of us at Rajasthan, this is a state that I love, and I'm sure that if people can take people to Bangkok and Singapore, why can't the corporates bring them to Rajasthan and to Gujarat to do much bigger events than spending so much money on international travel? I think this is something that we can all work together and look at it closely. Just a couple of quick things. My experience with Rajasthan itself. At the Clark Samer, 300 CEOs have attended my program, and they've found it very, very useful. Sir, I think, I'm really sorry So, to interrupt. I think yeah. but you have summarized the entire session of ours. Yeah. So would like that in case if any more things to be added, we have the open house in the evening also with awards and Okay. entertainment. Thank you. Thanks, Thank you. Thanks for your feedback. Thank you. Thank you all. And now I would request the small token of remembrance, those mementos, to be brought over to the stage for our panelists. One more small request to all the forum members and our panelists and our speakers and our artists. We just wanted to have a 5 minutes meet and greet session after we finish the final session, before we go back to our rooms and to our respective areas, before starting the award and recognition ceremony. So just a 5 minutes of a meet and greet with the forum members, specifically for all the speakers and artists we have on the board. Thank you. Harpreet Singh will hand over a token of love and appreciation. Thank you, memento, to our speakers. Abhijit Sawant, thank you. Dr. Jaydeep Mehta, thank you. Mr. Snehal Wadi, thank you. All the way from Gujarat. His updates keep coming. Every day he's in a different part of Gujarat. An opening act for the evening. This energetic